Assalamu alaikum all. The day is Friday and the date is 17th of July 2020. The date is 17th of July 2018. We start our day with the name of Allah and we are reciting 1000 Tasmiyah, Surah Kausar. So first of all, you fold your arms. Who is crying? Who is crying? Reciting and someone is crying. What happened? You are not agree with teacher? You are not willing to recite any surah? Be a nice baby. You are a good boy. Now fold your arms, everyone. Very nice, Anabia. Ahmed, fold your arms. Hassan, fold your arms. Very nice. I am watching you, Hassan. Good job. Now, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Very nice. Speak up. Bismillahir rahmanir rahim. Pray for knowledge. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Oh Lord, Rabbi zidni ilma. Oh Lord, increase my knowledge. Increase me in knowledge. The translation is, oh my Lord, Knowledge. increase me in knowledge. Knowledge. Very nice. Increase me Ahmed, I'm not hearing your voice. knowledge. Very good. Now, article number 1, पहला कलमा तैयब. Article number 1. पहला कलमा तैयब. तैयब माने पाक. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Translation: there is no God beside Allah and Muhammad, peace be upon him, is the prophet of Allah. Very nice. Good job, Anabia. You recited like a teacher. Hassan Abdullah, you are not reciting. Look at the teacher. Ahmed Raza, where you goes? Yes, recite with teacher. Now we are reciting Surah Kausar. Surah Kausar. Inna atayna kal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka Inna shaniyaka huwal abtar. Inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hassan Abdullah, you are not reciting. मैं नाराज हो जाऊंगी. जो टीचर के साथ नहीं पढ़ता फिर टीचर उससे नाराज हो जाता है. हो जाऊं? हो जाऊं? कुट्टी हो जाऊं? कुट्टी हो जाऊं? नहीं ना? तो फिर जल्दी जल्दी से टीचर के साथ पढ़ें. दोबारा से रिपीट करते हैं. सूरह कौसर. इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर. इन्ना शानियका हुवल अब्तर. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Whenever you recite any surah, you have to say Sadaqallahul Azim. Okay? Now, today we are talking about something new. Now, I will mute to you all. बहुत कम आ रही है? ओके, मैं अब बहुत जोर से बोलूंगी फिर तेज आएगी. ठीक है? अब मैं बहुत जोर से बोलूंगी, लेकिन अब आप सब लोगों ने
फोल्ड आर्म करके बैठना है और मेरी बात को गौर से सुनना है. ओके, सीधे होके बैठिए नाबिया. Sit straight. Yes, like this. Ahmed is sitting proper. Very nice, Ahmed. And Hassan Abdullah too. Today we are talking about the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hope you check the software as well. I post my video as well over there. And there is one poem which are making worried to the other parents. But don't worry, that poem only for telling the 7 steps of Hajj. That is not a basically song. वो बच्चों को 7 स्टेप ऑफ हज बताने के लिए दिखाई जाएगी और सिखाई जाएगी. It's not necessary to learn that. Just remember and keep it in your mind कि which 7 step we can do on Hajj. Okay? So first of all, I will tell the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam. First, before starting, you tell me, did you watch that video which I posted in university? जो मैंने अपनी आवाज में आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, वो आपने देखी? जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, फिर मैं आगे आपको स्टोरी स्टार्ट करती हूँ. Yes, unmute yourself, quick. Unmute. मैंने देखी है. आपने देखी है? वेरी गुड. अनाबिया, आपने देखी? Yes. Good. Hassan Abdullah, did you watch? बोलो देखिए. Yes. Good, very good. Yes. Now I will share something with the picture as well, ताकि आप उसको समझ सकें. Fine. Just a minute. I will share with the. Good. Good. हमारे बना खुद बनाऊंगी. ठीक है. Good. It's sharing. ये आ गया. अभी आएगी. Wait करें, अभी आएगी. It will be appeared. Wow. Just a minute. It will be. Wow. Don't make noise. Hassan Abdullah, don't make noise. Now you can see. कार्टून जैसा लग रहा है. कार्टून है. नजर नहीं आ रही. अभी आएगी बेटे. It's going to transfer ना, तो वो टाइम लेती है. Yes. ये क्या? Yes बेटे, speak up. Anabia, I am hearing you. हाँ, तस्वीर नहीं आ रही. अभी आएगी. Just wait. नहीं आ रही. Just a minute. तस्वीर नहीं आ रही मिस. नहीं ना भी आई. रखूंगी. यार गलता. ताते बच्चे डांटता हूँ. मैंने कहा है ना करने के टाइम सारी शरारतें खत्म कर दिया करो. को This you can see. चलो जल्दी. Did you see? बस रखा हुआ है मैंने. यहाँ रखा हुआ है. दोनों का रखा. This is a story about. ऊपर रखा हुआ है बस. This is a story about prophet. Okay? This is a story about prophet. And what is the name of prophet? The name of prophet is Hazrat Ibrahim alayhi salam. सलाम. The name of prophet is Hazrat Ibrahim alayhi salam. बताओ. The name of prophet is
Hazrat Ibrahim alayhi salam. Now you can all listen attentively. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Yes. This is the story about Hazrat Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam is the prophet of Allah. Hazrat Ibrahim alayhi salam is the prophet of Allah. Who is Hazrat Ibrahim alayhi salam? Very good. He is the prophet of Allah. Speak up. Prophet of Allah. Yes. And he has one son. And he has one son. Son. Yes, he has one son, and the name of son is Hazrat Ismail alayhi salam. The name of son is Hazrat Ismail alayhi salam. You listen first and then repeat. Okay, पहले आप टीचर को सुने और फिर repeat करें. The prophet name is Hazrat Ibrahim alayhi salam, and the son name is Hazrat Ismail alayhi salam. What is the name of prophet? Repeat it. Ibrahim alayhi salam. Very good. And what is the name of son? Hazrat Ismail. What is the name of son? Ismail Hazrat Ismail Alayhi salam. alayhi salam. Very good. Ismail alayhi salam. Hazrat Ismail alayhi salam. Ismail alayhi salam. Alayhi salam. Very good. Now Alayhi salam. I will mute you all of you because I must say the story. तो फिर उसमें आवाज नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना? No, you sit quiet and listen and watch. Fine? Don't be making noise. Hazrat Ibrahim alayhi salam is the prophet of Allah, and Hazrat Ismail alayhi salam is the son of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Okay? One day, Hazrat Ibrahim alayhi salam is going to sleep and watch the dream. Now you can see the picture I am sharing with you. Hazrat Ibrahim alayhi salam going to sleep and saw a dream. And in the dream, he saw Allah is asking to him, give sacrification. What is sacrification? Sacrification is a action that you can do with your loving one things. आपकी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा और मोहब्बत करने वाली चीज है वो आप किसी और को दे दें. That is means of sacrification. Okay? So Hazrat Ibrahim is going to sleep and saw a dream, and in the dream Allah asked to him, give sacrification. Continuously 3 days he saw that dream. Suddenly, after 3 days, he discussed this matter with his wife, Bibi Hajra. And Bibi Hajra and Hazrat Ibrahim discussed this matter to his son, Hazrat Ismail alayhi salam. When Hazrat Ismail alayhi salam heard this,
he replied to the parents, no worries, I am ready to give sacrification. I am ready to give sacrification. Hazrat Ismail alayhi salam tell to his father, Hazrat Ibrahim alayhi salam, I am ready to give sacrification. When he says this, the parents are going to be happy. We are giving the sacrification to Allah. And Hazrat Ibrahim alayhi salam said to Bibi Hajra, please get ready to my child. We are going to give sacrification. After ready, Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam both are going to the ground of Safa and Marwa. It is situated in Saudi Arab, where the Khana Kaaba. ठीक है? वो कहाँ है सफा एंड मरवा? खाने काबा के करीब. Then what happening? They are going happily over there, and gradually they reach over there, and Ismail alayhi salam feel pleasant and happy to give sacrification. See the picture? They are reach in that area. Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam, both. And Hazrat Ismail alayhi salam go to the ram and lay down over there. You can see in the next picture. When you see the picture, you realize more than. Okay? That's why I'm sharing pictures too. Then what happening? Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam ready to do it. This action, before this action, when they are doing this, when Ibrahim alayhi salam having the knife in hand, you can see he is having a knife in hand, and Ismail alayhi salam is smiling, not worried. He is smiling and giving the sacrification to Allah. And Ibrahim alayhi salam having the knife in hand, they both are going to ready to give sacrification. Unfortunately, when this action will happen, Allah sent one sheep from the sky. Allah sent one sheep from the sky. And the replacement of Ismail alayhi salam, the neck of sheep is going to be cut. जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नेक पे नाइफ रखी और आंखों पे पट्टी बांध ली, अल्लाह ने सडनली उसी टाइम पे स्काई से एक शीप को भेज दी, और वो शीप हजरत इस्माइल की जगह पे आके लेट गई, और उस शीप की नेक जो थी वो क्या हो गई? कट हो गई. You can see in the picture. Look, Hazrat Ismail alayhi salam is standing and the sheep is laying down over there, and Hazrat Ibrahim alayhi salam having a knife in hand. And when he cut, the sheep की neck जो थी वो कट गई. And suddenly angel Jibrail alayhi salam came from sky and give this message to Ibrahim alayhi salam and Hazrat Ismail alayhi salam, you are the winner. Allah likes your sacrification. You are the winner. जब एंजल जिब्राइल ने अल्लाह ताला का मैसेज हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को दिया, they both are going to be more happy कि we are giving the sacrification और Allah accept is. अल्लाह ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. एंड
They both are happily and go back to the home and tell to this story to Bibi Hajra as well. And she is also happy and say thank you Allah with pray namaz. जब भी हमें thank you Allah करना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अल्लाह ताला को शुक्रिया कहते हैं. ठीक है. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बोथ डू दिस एक्शन. अल्लाह ताला को उनकी सेक्रीफाइजेशन इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई. हसन अब्दुल्ला, यू डिस्टर्ब द क्लास बेटे. सिट प्रॉपर, बी अ गुड बेबी, यू आर अ नाइस बॉय. Look at the Anabia, look at the Ahmad. They are sitting quietly and listening and watching. Yes, very nice. Thank you, my babies. अल्लाह ताला को उनकी सेक्रीफाइजेशन इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई. So Allah decided every year we as a Muslim performing this action like a Hajj. Like a Hajj. And we can do Hajj on the place of Khana Kaaba, which will built by Hazrat Ibrahim alayhi salam. खाना काबा को बनाने वाले भी जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम थे. उन्होंने ही खाना काबा की बिल्डिंग को बनाया था, तामीर किया था. तो अल्लाह ताला ने उनकी इस सेक्रीफाइजेशन को इतना ज्यादा पसंद किया कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि एवरी ईयर ऑल द मुस्लिम्स डू हज at the place of Khana Kaaba. And when we performing Hajj, we follow 7 steps of Hajj. That is necessary. जैसे आप स्कूल आते हैं और आपको स्कूल आने के लिए बेटे wait for a minute. Yes. Who is doing this? Don't do this. Don't color the picture. How can I explain if you color the picture? Don't do it, bete. Very nice babies. And I hope they all are not doing the bad things. Because when we do bad things, shaitan will tell us. और हमें शैतान की बात नहीं सुननी होती है. ठीक है, हमें अल्लाह और उनके प्रॉफिट्स की बात सुननी होती है. So we don't do this. So अल्लाह को उनकी सेक्रीफाइजेशन इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कहा कि every year all the Muslim all over the world they perform Hajj and there are 7 steps of Hajj. I will share one more picture to you. You realize when we are doing the Hajj, first of all we go to खाना काबा. कहाँ जाना है हमें हज करने के लिए? खाना काबा. दिस इज द हाउस ऑफ अल्लाह. अल्लाह के घर जाना है जिसकी बिल्डिंग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिल्ट की थी. ठीक है. When we are going to खाना काबा, we have to wear ihram. We have to wear ihram. I will share the separate pictures also. First you understand this, then we will share this. Ihram. Ihram is a dress which we are wearing when we are going to do Hajj or Umrah. You can see in the picture, there is a mountain area. Mountain area is, who is doing this? Again, I am telling, don't do it. Anabia Ahmed, you are doing this. I saw this. Share your video. I want your video. And don't do this. Ihram is a dress
which we are wearing when we go and perform Hajj. Look at the dress of Ihram. Boys are wearing like this, and it is white in color. Okay? And girls are wearing like this to cover the whole body, just only the face is going to be a pair of the girls. And boys is wearing like this. Fine, this is the dress of Ihram. When Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail is going to the Safa and Marwa ground to give the sacrification, one of someone is coming timely 3 times, and that is Shaitan. वो शैतान था जो 3 times हजरत इब्राहिम के सामने आया और उनसे कहने लगा, don't go there, वहां नहीं जाओ, don't give sacrification, तुम ऐसा काम नहीं करो, अल्लाह को अपनी sacrification मत दो. But हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम is the prophet of Allah. उन्होंने कहा कि no, I will give it. Allah asked to me, अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मुझे sacrification देनी है, तो why not I give? I will give it. I will give it. फिर क्या हुआ? जब 3 times शैतान ने आके उनको कहा, तो हजरत इब्राहिम ने हर दफा उसको हटा दिया, और हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल happily both are going to the ram area and give sacrification. तो जो माउंटेन एरिया आपको पिक्चर में नजर आया था, that is that area where Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam goes. And you can see the one pillar. आपको ये पिलर एक नजर आ रहा है? नजर आ रहा है ना बच्चों? Nod your head ताकि मुझे पता चल सके. Nod your head. Yes, ये वाला पिलर नजर आ रहा है. This is the शैतान. So for throwing the शैतान something, शैतान को भगाने के लिए, the other step of Hajj is we can collect the pebbles. Pebbles are the small stones which we found in the mountain area of Safa and Marwa, जो हम सफा और मरवा के mountain area से collect करते हैं. ठीक है? That is called pebbles. And that pebbles we have to throw on these 3 shaitans. The other step is we can stay in the tent when we reach in the खाने काबा. अब 24 hour हम खाने काबा में तो नहीं बैठे रहेंगे. And it's not allowed, and thousand people are coming to do and performing Hajj. So there are some tents area. We can stay in the tent area. Then on the 10th of Zilhajj, we can give that sacrification with these animals: sheep, camel, goat, and cow as well. Okay? Now, the song and the poem which we are sharing in the group or university as well, that is telling us the 7 step of Hajj. The 7 step of Hajj. You can see this picture and realize, and I must sing that song. We will all go to Makkah for the Hajj. We will all go to Makkah for the Hajj. We will all go to Makkah. We will all go to Makkah. We will all go to Makkah on the Hajj. We will walk around the Kaaba 7 times. We will walk around the Kaaba 7 times. When we are performing Hajj, we have to take round around the Kaaba 7 times. And that poem tell us, we will walk around the Kaaba 7 times. We will walk around the Kaaba. We will walk around the Kaaba. We will walk around the Kaaba 7 times. We will drink Zamzam water on the Hajj. What about the Zamzam water? I will tell you the short story of Zamzam water as well. When Hazrat Ibrahim alayhi salam, a young man, Hazrat Ismail was born, and after his birth,
हजरत इब्राहिम गोज टू द डेजर्ट एरिया। जब वो छोटे से पैदा हुए थे तो उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल को छोड़ के रेगिस्तानी एरिया में, डेजर्ट एरिया में चले गए थे। अब बीबी हाजरा तो बहुत परेशान हुई कि हजरत इब्राहिम जा रहे हैं। वो कहते थे कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने उनको कहा कि आप ना जाएं क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी है जिसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हजरत इब्राहिम ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह ने बुलाया है, मुझे जाना है। और वो ये कह के डेजर्ट एरिया में चले गए। अब बीबी हाजरा को पानी की जरूरत हुई क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम होता है और जब वो खत्म हो जाता है तो ढूंढ के लाना पड़ता है। तो बीबी हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वो छोटे से बेबी थे उनको लेके डेजर्ट एरिया में गई और वहां पे पानी ढूंढने लगी। 7 times she goes up to the Safa mountain, 7 times she comes down to the Safa mountain, मरवा माउंटेन। और फिर उन्होंने हजरत इस्माइल को एक जगह जमीन पे लिटा दिया। हजरत इस्माइल बहुत छोटे से बेबी थे और वो रो रहे थे, उनको पानी चाहिए था, चिल्ला रहे थे। और जब वो, आपने देखा है ना, जब बेबीज रोते हैं तो अपनी टांगों को यूं यूं मूव करते हैं, अपने लेग्स मूव करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो वो भी ऐसे ही कर रहे थे। इस ड्यूरेशन में बीबी हाजरा पानी की तलाश में यहाँ से वहां जा रही थी। When she come back, she saw there is a waterfall from the land. The water comes out. जमीन के नीचे से पानी निकल रहा है and she is very much surprised. This is the desert area और यहाँ से पानी कैसे आ रहा है? How it's possible? Now look at this picture. And Bibi Hajra is getting surprised, but she wants water. तो उन्होंने जल्दी से वो पानी लिया और वो पानी लेके फौरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाया। ठीक है, तो that is water which come out from the land of Safa and Marwa. It's called Zamzam water. It's called Zamzam water. We will drink Zamzam water on the Hajj. That is the necessary part of the Hajj. We drink Zamzam water. Okay? We will drink Zamzam water on the Hajj. We will drink Zamzam water. We will drink Zamzam water. We will drink Zamzam water on the Hajj. We will throw 7 pebbles on Shaitan. अभी मैंने आपको बताया स्टोरी में कि we are collecting the pebbles from the Safa and Marwa walk. During the Safa and Marwa walk, we collect 7 pebbles and we can throw on 3 शैतान, क्योंकि शैतान ने 3 times हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को रोकने की कोशिश की थी और मना करने की कोशिश की थी कि डोंट डू दिस एक्शन। लेकिन हजरत इब्राहिम ने क्या किया? उनको मना कर दिया और उनसे कहा कि नहीं, आई एम गिविंग द सैक्रिफाइजेशन ऑफ माई सन टू अल्लाह। देन we can collect 7 pebbles and throw to the shaitan. We will throw 7 pebbles on shaitan. We will throw 7 pebbles on shaitan. We will throw 7 pebbles. We will throw 7 pebbles. We will throw 7 pebbles on shaitan. We will do sacrifice on the Hajj. जब हमें sacrification देनी है तो we are using these animal like sheep, क्योंकि आपको बताया ना टीचर ने कि जब जैसे ही सेक्रीफाइजेशन के लिए लेटे थे हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्या हुआ था? शीप आ गई थी। तो हमें शीप, गोट और कैमल एंड काउ की सेक्रीफाइजेशन देनी होती है। ठीक है, तो वी आर गिविंग दी सेक्रीफाइजेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द हज एज वेल। जब हम हज की परफॉर्मिंग करते हैं, सो वी विल गिव दैट सेक्रीफाइजेशन एज वेल। So we will give sacrifice on the Hajj.
we will give sacrifice on the Hajj. So this is the story about Hazrat Ibrahim alayhi salam and his sacrification. I hope you like the story and you can understand all these things which I am trying to explaining to you babies with the picture as well. Now quickly unmute yourself everyone. Then I will ask you. Yes. Ahmed, unmute yourself bete. Did you understand the story and you like it with the picture? Ahmed, speak up bete. Yes, Anabia. Anabia, Ahmed, you also. स्टोरी समझ आई? Did you understand the story of Hazrat Ibrahim alayhi salam and his sacrification? Good. अब आप किसको बताएंगे ये स्टोरी? किस किस को सुनाएंगे? You must tell to your नानी, नाना, दादी, दादा और someone else. ठीक है? जब आप उनको ये स्टोरी बताएं, बाबा को भी, ठीक है? जब आप उनको ये स्टोरी बताएंगे ना कि आपको टीचर ने ये बातें बताई हैं, 7 स्टेप्स बताए हैं हज के, और हज इस तरह से अल्लाह ताला ने मैंडेटरी कर दिया कि हर मुस्लिम को एवरी ईयर 10th of जिलहज को हज करना है और सैक्रिफाइजेशन देनी है. क्यों? बिकॉज दैट सैक्रिफाइजेशन बिलोंग्स टू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. And we are the nation of Hazrat Ibrahim and Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam as well. हमें उनकी फॉलोवर बनना है. That's why we do every year. अभी आपकी ईद आने वाली है ना, मम्मा ने बताया ना आपको कि ईद आने वाली है. You are bringing the cow, goat, camel और sheep. आप भी लेके आएंगे अपने घरों पे.